جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. عشت في الدنيا كريما، صابرا رغم البلايا، عشت إنسانا رحيما، لطفك عم البرايا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम है नाज़रीन आप सबका आज के हमारे सेशन में इंशाअल्लाह हम जो कुरान मजीद की 46वीं सूरत सूरह अहक़ाफ़ इसका पहला रुकू हम तिलावत कर रहे थे और इसकी 5 आयतें हमने पढ़ी थी। आज इसकी बक़िया 5 आयतें मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم
इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी आयत नंबर 6 to 10 रुकन नंबर 1 की। इंशाल्लाह इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। और जब इन तमाम इंसान जमा किए जाएंगे, इस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और इनकी इबादत के मुनकिर होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयत सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है, तो ये काफिर लोग इसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या इनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी न बचा सकोगे। जो बातें तुम मनाते हो अल्लाह इनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो बड़ा दर्द गुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ इसी वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घुमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। तो ये था ट्रांसलेशन आज की इन आयतों का। तो इंशाल्लाह इसकी तफसीर में जाने से कबल हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इसकी पिछली 5 आयतों में, आयत नंबर 1 to 5 में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरे में सबसे पहले तो ये बताया कि ये जो कुरान है ये बरहक है और ये अल्लाह ही की तरफ से नाजिल किया है। यानी कि जिस तरह के इनके एतराज़ात थे उसका जवाब दिया गया और कहा गया कि देखो, खबरदार कर दो इन काफ़िर लोगों को जो हकीकत से मुँह मोड़ रहे हैं। यानी उनको पता है कि एक दिन क़यामत आने वाली है, यानी हर इंसान को मरना है। फिर भी ये लोग जानते हुए अल्लाह की किताब को झुठला रहे हैं। और इनसे ये भी कहा गया कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और की मदद मांगते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उस दिन वो किसी काम के ना आएँगे। वो खुद भी अपनी परेशानी में होंगे, और वो जो ये समझ रहे हैं कि वो इनकी बातें सुनती हैं और इनकी मदद करते हैं, तो बिल्कुल गलतफ़हमी में हैं, क्योंकि ना वो इनकी बातें सुनते हैं, ना इनकी कोई मदद कर पाएँगे। तो इस तरह की बातें हुई थी। यही सिलसिला मज़मून इन आयतों में भी है। इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। और जब तमाम इंसान जमा किए जाएँगे, इस वक़्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और इनकी इबादत के मुनकिर होंगे। यानी वो साफ-साफ कह देंगे कि ना हमने इनसे कभी ये कहा था कि तुम हमारी इबादत करना, और ना हमें ये खबर है कि ये लोग हमारी इबादत करते थे। अपनी इस गुमराही के ये खुद ज़िम्मेदार हैं, इसका ख़मियाज़ा इन्हीं को भुगतना चाहिए। हमारा इस गुनाह में कोई हिस्सा नहीं है। इन लोगों को जब हमारी साफ-साफ आयत सुनाई जाती हैं और हक़ इनके सामने आ जाता है, तो ये काफ़िर लोग इसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। इसका मतलब ये है कि जब कुरान की आयत कुफ़ार मक्का के सामने पढ़ी जाती थी, तो वो साफ ये महसूस करते थे कि इस कलाम की शान इंसानी कलाम से बदरजहा बुलंद है। इनके किसी शायर, किसी खतीब और किसी बड़े से बड़े अदीब के कलाम को भी कुरान की बेमिसाल फ़साहत व बलागत, इसकी वजद आफ़रीन ख़ताबत, इसके बुलंद मज़ामीन और दिलों को भरमा देने वाले अंदाज़े बयान से कोई मुनासिबत ना थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कलाम की शान भी वो ना थी जो खुदा की तरफ से आप पर नाजिल होने वाले कलाम में नज़र आती। जो लोग बचपन से आपको देखते चले आ रहे थे, वो खूब जानते थे कि आपकी ज़बान और कुरान की ज़बान में कितना अज़ीम फ़र्क है। और इनके लिए ये बावर करना मुमकिन न था कि एक आदमी जो 40-50 बरस से शब रोज़ इनके दरमियान रहता है, वो एकाएक किसी वक़्त बैठकर ऐसा कलाम घड़ लेता है, जिसकी ज़बान में इसकी अपनी जानी पहचानी ज़बान से क़त्अन कोई मुशाबिहत नहीं पाई जाती। ये चीज़ इनके सामने हक़ को बिल्कुल बेनकाब करके ले आती थी। मगर वो चूँकि अपने कुफ़्र पर अड़े रहने का फ़ैसला कर चुके थे, इसलिए इस सरीह अलामत को देखकर सीधी तरह इस कलाम को कलाम वही मान लेने के बजाय ये बात बनाते थे कि ये कोई जादू है, जादू का करिश्मा है। मौलाना इसके बारे में भी यानी कि इस तरह के जो इनके एतराज़ थे उसकी तशरीह की है सूरह अंबिया की हाशिया 5 और सूरह साद की हाशिया नंबर 5 में भी इसकी तफसीर आई है। क्या इनका कहना ये है कि रसूल ने इसके खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, इस सवालिया तर्ज़ बयान में सख्त ताज्जुब का अंदाज़ पाया जाता है।
مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اتنے بے حیا ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود کھڑانے کا الزام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ان کا تصنیف کردہ کلام نہیں ہو سکتا، اور ان کا اسے سحر کہنا خود اس امر کا صریح اعتراف ہے کہ یہ غیر معمولی کلام ہے جس کا کسی انسان کی تصنیف ہونا ان کے اپنے نزدیک بھی ممکن نہیں ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود کھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو، جو باتیں تم مناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ ان کے الزام کا محض بے اصل اور سراسر ہٹ درمی پر مبنی ہونا بالکل ظاہر تھا، اس لیے اس کی تردید میں دلائل پیش کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اگر واقع میں نے خود ایک کلام تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کرنے کا جرم عظیم کیا ہے جیسا کہ تم الزام رکھتے ہو تو مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم نہ آؤ گے، لیکن اگر یہ خدا ہی کا کلام ہے اور تم جھوٹے الزامات رکھ رکھ کر اسے رد کر رہے ہو تو اللہ تم سے نمٹ لے گا۔ حقیقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ بالکل کافی ہے۔ ساری دنیا اگر کسی کو جھوٹا کہے اور اللہ کے علم میں وہ سچا ہو تو آخری فیصلہ لازماً اسی کے حق میں ہوگا، اور ساری دنیا اگر کسی کو سچا کہہ دے مگر اللہ کے علم میں وہ جھوٹا ہو تو آخرکار وہ جھوٹا ہی قرار پائے گا۔ لہٰذا الٹی سیدھی باتیں منانے کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرو، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے، ایک یہ کہ فی الواقع یہ اللہ کا رحم اور اس کا درگزر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ زمین میں سانس لے رہے، جنہیں خدا کے کلام کو افطرا قرار دینے میں کوئی باک نہیں، اور نہ کوئی بے رحم اور سخت گیر خدا اس کائنات کا مالک ہوتا تو ایسی جسارتیں کرنے والوں کو ایک سانس کے بعد دوسری سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ دوسرا مطلب اس فقرے کا یہ ہے کہ ظالموں اب بھی اس ہٹ درمی سے باز آ جاؤ تو خدا کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اس ارشاد کا پس منظر یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو مکے کے لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں منانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بال بچے رکھتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ہم جیسے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جس میں یہ عام انسانوں سے مختلف ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ خاص طور پر اس شخص کو خدا نے اپنا رسول بنایا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو خدا نے رسول بنایا ہوتا تو وہ اس کی اردلی میں کوئی فرشتہ بھیجتا جو اعلان کرتا کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور ہر شخص پر عذاب کا کوڑا برسا دیتا جو اس کے شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کر بیٹھے۔ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اپنا رسول مقرر کرے اور پھر اسے یوں ہی مکے کی گلیوں میں پھرنے اور ہر طرح کی زیادتیاں سہنے کے لیے بے سہارا چھوڑ دے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی ہوتا کہ خدا اپنے رسول کے لیے ایک شاندار محل اور لہلہاتا باغ ہی پیدا کر دیتا۔ یہ تو نہ ہوتا کہ اس کے رسول کی بیوی کا مال جب ختم ہو جائے تو اسے فاقوں کی نوبت آ جائے اور طائف جانے کے لیے اسے سواری تک میسر نہ ہو، پھر وہ لوگ آپ سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں آپ سے پوچھتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی شخص کا رسول خدا ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ فوق البشری طاقتوں کا مالک ہو اور اس کے ایک اشارے پر پہاڑ ٹل جائیں اور ریگزار دیکھتے دیکھتے کشتے زاروں میں تبدیل ہو جائیں۔ اس کو تمام ما کانا و ما یکونا کا علم ہو اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہر چیز اس پر روشن ہو۔ یہی باتیں ہیں جن کا جواب ان فقروں میں دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر فقرے کے اندر معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ فرمایا ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی میرا رسول بنایا جانا دنیا کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ سمجھنے میں پریشانی لاحق ہو کہ رسول کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہوتا۔ مجھ سے پہلے جو بہت سے رسول آ چکے ہیں اور میں ان سے مختلف نہیں ہوں۔ آخر دنیا میں کب کوئی رسول ایسا آیا ہے جو بال بچے نہ رکھتا ہو یا کھاتا پیتا نہ ہو یا عام انسانوں کی سی زندگی بسر نہ کرتا ہو؟ کس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ اترا ہے جو اس کی رسالت کا اعلان کرتا ہو اور اس کے آگے آگے ہاتھ میں کوڑے لیا پھرتا ہو؟ کس رسول کے لیے باغ اور محلات پیدا کیے گئے
اور किस ने खुदा की तरफ बुलाने में वो सख्तियां नहीं झेली जो मैं झेल रहा हूँ। कौन सा रसूल ऐसा गुजरा है जो अपने इख्तियार से कोई मौजिज़ा दिखा सकता हो या अपने इल्म से सब कुछ जानता हो। फिर ये निराले मियार मेरी ही रिसालत के परखने के लिए तुम कहाँ से लिए चले आए। इसके बाद फरमाया कि इनके जवाब में ये भी कहो, मैं नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ, मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझे भेजी जाती है। यानी मैं इल्मुल गैब नहीं हूँ कि माजी, हाल, मुस्तकबिल सब मुझ पर रोशन हो और दुनिया की हर चीज का मुझे इल्म हो। तुम्हारा मुस्तकबिल तो दरकिनार, मुझे तो अपना मुस्तकबिल भी मालूम नहीं है। जिस चीज का वही के जरिए से मुझे इल्म दिया जाता है, बस इसी को मैं जानता हूँ। इससे जायद कोई इल्म रखने का मैंने आखिर कब दावा किया था, और कौन सा रसूल ऐसे इल्म का मालिक कभी दुनिया में गुजरा है कि तुम मेरी इस रिसालत को जांचने के लिए मेरी गैबदानी का इम्तिहान लेते फिरते हो। रसूल का ये काम कब से हो गया कि वो खोई हुई चीजों के पते बताए, या ये बताए कि हामिल औरत लड़का जनेगी या लड़की, या ये बताए कि मरीज अच्छा हो जाएगा या मर जाएगा। आखिर में फरमाया कि इनसे कह दो, मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। यानी मैं खुदाई इख्तियारात का मालिक नहीं हूँ कि वो अजीब व गरीब मौजिज़े तुम्हें दिखाऊं जिनके मुतालिबे तुम मुझसे आए दिन करते रहते हो। मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है वो तो सिर्फ यह है कि लोगों के सामने राह रास्त पेश करूं, और जो लोग इसे कबूल ना करें इन्हें बुरे अंजाम से खबरदार कर दूं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये वही मजमून है जो इससे पहले एक दूसरे तरीके से सूरह हामीम सजदा आयत 52 में गुजर चुका है। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है और वो ईमान ले आया और तुम अपने घुमंड में पड़े रहो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। मुफस्सिरीन के एक बड़े गिरोह ने इस गवाह से मुराद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु को लिया है, जो मदीने तैयबा के मशहूर यहूदी आलिम थे और हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये वाक़या चूँकि मदीने में पेश आया था, इसलिए इन मुफस्सिरीन का क़ौल ये है कि ये आयत मदनी है। इस तफ़सीर की बुनियाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये बयान है कि ये आयत हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में नाज़िल हुई थी। बुख़ारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न जरीर। और इसी बिना पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, क़तादा, ज़हाक, इब्न सीरीन, हसन बसरी, इब्न ज़ायद और औफ बिन मालिक अशरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुतादिक अकाबिर मुफस्सिरीन ने इस तफ़सीर को कबूल किया है। मगर दूसरी तरफ अकरमा और शाबी और मसरूक कहते हैं कि यह आयत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरी सूरत मक्की है। इब्न जरीर तिबरी ने भी इस कौल को तरजीह दी है और इनका कहना यह है कि ऊपर से सारा सिलसिला कलाम मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करते हुए चला आ रहा है और आगे भी सारा खिताब इन्हीं से है। इस सयाक व सबाक में एकाएक मदीने में नाजिल होने वाली आयत एक आयत का आ जाना काबिल तसव्वुर नहीं है। बाद के जिन मुफस्सिरीन ने इस दूसरे कबूल कौल को कबूल किया है, वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास की रिवायत को रद्द नहीं करते, बल्कि इनका ख़याल ये है कि यह आयत चूँकि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के ईमान लाने पर भी चस्पा होती है, इसलिए हज़रत साद ने कदमन कदमा की आदत के मुताबिक ये फरमान दिया कि ये इनके बारे में नाज़िल हुई। इसका ये मतलब नहीं कि जब वो ईमान लाए इस वक़्त इन्हीं के बारे में ये नाज़िल हुई, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो इस आयत के ठीक-ठीक मिस्दाक़ हैं और इनके कबूल ईमान पर ये पूरी तरह चस्पा होती है। बज़ाहिर यही दूसरा कौल ज़्यादा सही और माक़ूल महसूस होता है। इसके बाद ये सवाल हल तलब रह जाता है कि इस गवाह से मुराद कौन है? जिन मुफस्सिरीन ने इस दूसरे कौल को इख्तियार किया है, इनमें से बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन बाद का ये फ़िक्रा कि वो ईमान ले आया और तुम अपने घुमंड में पड़े रहे, इस तफ़सीर के साथ कोई मुनासिबत नहीं रखता। ज़्यादा सही बात वही मालूम होती है जो मुफस्सिर निसापुरी और इब्न कसीर ने बयान की है कि यहाँ गवाह से मुराद कोई शख्स नहीं बल्कि बनी इसराइल का आम आदमी है। इरशाद इलाही का मुद्दा यह है कि कुरान मजीद जो तालीम तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, ये कोई अनोखी चीज़ भी नहीं है। दुनिया में पहली मर्तबा तुम्हारे ही सामने पेश की गई हो और तुम ये उज़र कर सको, हम ये निराली बातें कैसे मान लें, जो नौ इंसान के सामने कभी आई ही ना थी। इससे पहले यही तालीमात इसी तरह वही के ज़रिए से बनी इसराइल के सामने तौरात और दूसरी कुतुब आसमानी की शक्ल में आ चुकी हैं। एक आम आदमी इनको मान चुका है और ये भी तस्लीम कर चुका है कि अल्लाह की वही इन तालीमात के नुज़ूल का ज़रिया है। इसलिए तुम लोग ये दावा नहीं कर सकते कि वही और ये तालीमात नाक़ाबिल फ़हम चीज़ें हैं।
असल बात सिर्फ यह है कि तुम्हारा गुरूर व तकब्बुर और बेबुनियाद व घुमंड ईमान लाने में माने हैं। तो ये थी तफसीर आज की इन 5 आयतों की। तो इंशाल्लाह हम फिर कल हाजिर होंगे दूसरे रुकू के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर निज़ाम भाई। बारकल्लाह फीक। इंशाल्लाह मैं मंडे को आएंगे, कल तो संडे होता है। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चले जज़ाकल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody to our evening reminders. I hope everybody has been well during the week, and weather has obviously changed, getting a little bit chilly over here in London. Understandably, it's around the time of year where all these rains and obviously that like all the conditions basically they move towards winter, and every day gets shorter and darker, and of course colder as well. So inshallah, hope that we will have a good winter as well, regardless of the conditions in terms of COVID and everything. But alhamdulillah, if you look back to when it all started, it has been almost good 8-9 months roughly, and all praise to Allah subhanahu wa ta'ala that we have eventually made through it, and alhamdulillah, if we have been unaffected by this virus, then it has been a big blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and we hope and pray that inshallah our winter will also be continue to be the same, and inshallah by the time we come into the New Year's, inshallah ta'ala, hopefully things will be returning to normal. And I mean, it all started around the start of this year, so hopefully when the next year starts, inshallah ta'ala, we will look back and thank Allah subhanahu wa ta'ala that indeed a whole year has gone, and Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to make it into the next year. So inshallah. Now, and we all know that these are the days of the month during which the blessed birth of Prophet ﷺ took place, and indeed it is a big moment in the history of time, really, because we all know that I mean, if you take the example of the birth of Isa alayhi salam, I mean, although it is not sure exactly at what time in date during the year it took place, but it is considered something like a celebration as well, and it has been continued to well these days as well, although it has changed drastically. But it's not really about the objective is not just to celebrate the birth. It is to really understand and to really look into and basically have a perspective about why was the reason these people were sent. And every time when a prophet is sent, and of course apart from Isa alayhi salam, Jesus, every prophet was born as a pretty much normal child, and they grew up as a normal child, really. And then after some time when obviously they became mature and eligible for the responsibility, they were given the prophethood. And indeed, every occasion that was done, it is something to think about,
it is something to if we can, we should really go back and read about the conditions and the circumstances which were happening in those time, and to basically, like I said, get a perspective of why did it actually happen, why there was a need for somebody as a prophet to be sent to the people of the world. And we I mean, if we just very much briefly look into the backgrounds of some of the prophets, if we take Prophet Ibrahim alayhi salam as the beginning, of course, then we all know that before Prophet Ibrahim alayhi salam, there had been a long time since a prophet was sent, and there was a big gap in between, and that the right guidance and basically the concepts of people were completely they were changed, and they were diverted from the righteousness and really the true path of Allah subhanahu wa ta'ala, and it was, everything was basically mixed up with all other things. So indeed, at that certain point, there was obviously a need to remind people of the true guidance and to bring them back, in terms of to basically offer the as a for example, if whatever was available in those times, if there was not at all that component of truth left in those beliefs and everything, so it was a major requirement that the right sort of the guidance and the right path of life needs to be presented to the people. So, and again, I mean, that is just like a apart from, of course, the need for to rectify the beliefs of the people. When I mean, it is, if even if you look now, that if people don't follow the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, then there are countless other injustices and sort of basically the whole society it becomes very much sick, not just in terms of beliefs, but in every other social way, and all those, for example, how the people are ruled, and how people tend to live, and pretty much everything, it becomes kind of sick. So if somebody is sick, obviously they need some sort of remedy, and the prophets were always sent for that reason, to provide the remedy to the people and to basically cure the ills of the society. So again, that was the obviously the brief background for Prophet Ibrahim alayhi salam. Then if you look at Prophet Musa, then we all know the whole story of how very much the people of Israel, they were pretty much tormented by the pharaohs, and they were living just the life of slaves, really, under the king, and all sorts of hardships and torments were basically done on them. And again, that they need to be helped and
they were to be, freed from all those persecutions and everything. So again, the prime objective of sending Prophet Musa alayhi salam was to free that nation, and to, of course, as a general as well, bring people to the right path. So that was the prime objective of Prophet Musa alayhi salam. Now, if you look at Prophet Isa alayhi salam, we look at a slightly different sort of story there. What happened was, when the people of Israel, they were freed from the Pharaoh, and they, after a long time, they started to gain some sort of power in the land, and they became very much influential, and the prime duty they were given was to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala, which Prophet Musa gave them. But unfortunately, they became very much arrogant, and they became very much they started enjoying their influence and their power, and the whole idea of being the chosen ones, and all those sort of things. And what eventually they started doing is, they pretty much start making up their own teachings and stuff, and they start distorting the guidance, the right guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. So the main objective of Prophet Isa alayhi salam was to basically warn them and to bring them obviously back to the right path. But we know the response he got, and what happened eventually, that those chosen ones, they decided to, they were like, no, I'm sorry, we are we are much pure, and we are much more holier, and we don't need to be corrected in any ways. And what we will do is, we will just we all know what apparently they did. They crucified the Messiah, which they were waiting for a long time, just for this reason, that what Prophet Isa was doing was, he was actually making them the culprits of all the evils in the society, and all the the ills that were spread in that time, and they just did not like it. And whatever happened. So that was the reason for Prophet Isa alayhi salam. Now, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long time between Prophet Isa and Rasulullah, roughly around 500 years, 5 centuries, close to 600 years really. So now, what we find in the pretty much the context of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, all the earlier prophets that we discussed, they were sent pretty much in the same area, that of the holy land of Palestine, and adjacent areas. And they had some sort of interactions, they had some sort of impact, and dealings with the outer parts of the world. But again, if we consider, even like, for example, 100 or so years ago, pretty much, if we consider our basically 2 generations before us, what happened was, wherever people used to be born, they pretty much die in the same place, and they hardly really go out to to see the world really, and they don't really
have any sort of interactions with the rest of the world. And pretty much what happens is, yes, you do hear about things, what's happening. If somebody travels somewhere, they will come back and they will obviously tell you stories about it. And that was the sort of interactions which the rest of the world had with the place of the prophets, Palestine, and all this Jordan and Syria and Iraq. So obviously, when you don't have some sort of direct interaction, you don't have that much. You don't take too many things from some civilization, and that was the case in Arab. So they were traders. They used to travel to the place of the prophets, the land of Palestine, and obviously they used to hear about all these stories. They knew, the sort of the guidance which was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And we all know that even Arabs themselves had few of the prophets sent, among them, obviously, Prophet Ismail alayhi salam and Prophet Saleh, Prophet Hud. So these were sent in the land of Arabs. And so they had some sort of understanding. And well, if we consider that where Rasulullah was born, the city of Mecca, it was nothing but a barren desert, really. And it was the population or the civilization started in that place after Prophet Ibrahim alayhi salam left his family in in that place. So I mean, the beginnings, the roots of Mecca was purely based on the right foundations, really. And we all know the whole story, how Prophet Ibrahim alayhi salam built the Kaaba, and the sort of du'as he was making about his the coming generations, that he wanted them to be righteous. He wanted them to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala, which he was following. But again, with the passage of time, really, things got very much mixed up. And there was the concept again. They had a understanding about the all the beliefs, but unfortunately things were way far the opposite of the right teachings. And based on the sort of the nature of these people, they were very much barbaric, and they had all sorts of ignorant traditions, and the customs and everything they used to follow. It was way far from any sorts of like modern civilization, or this kind of even like in that time there were civilizations which used to be called the enlightened ones, the ones who had knowledge, the ones who were progressing, and the ones basically who were very much developed in a way, if we compare it to current times. So Arabs were very much like if even in the third world countries of present times, they are far better than the conditions of the Arabs at that time.
I mean, obviously, we all know we must have heard and read about all these different sort of stories, what we can find about uh, the kind of traditions they had. So one of them, and pretty much um, it just reflects the whole thinking of the society really. For example, if somebody had a daughter, they would go and bury them alive. I mean, nothing can really fall below that. It's the most ignorant sort of mentality you can have. So, and apart from that, some of the evils which continued for a long time even after that in the rest of the world, all the slavery and the cruelty to the less for example, the tribes, and for example, if somebody was not that powerful, obviously they were to be suppressed and oppressed by the powerful ones, and obviously slaves were treated in the worst manner. um, you know Not even considered humans. Even animals were considered more important than the slaves. So those were the times really where everywhere the sort of wherever you look really there was darkness, and there were cruelties, injustices, and all the evils you can think of, both moral and social evils. So that was the kind of situation in Arabia and far beyond as well. Now, when we look at these reasons, and this is the kind of background which we get to know uh, around the time of the birth of Prophet ﷺ. So this was not a rescue call for one particular group of people. Um, yes, there was the need to again rectify the beliefs of the people, but primarily and the most important of all was the condition of humanity as a whole, which was um, at that time, and literally everywhere, the less fortunate, the less powerful, they were literally crying for help. So the whole humanity, they were looking for some sort of help to ease their situation, to get rid of the problems, get the oppressions finished, and basically the whole humanity was under deep state of you know basically uh, torment really. People had no hope. People were they were looking for something, but they had nowhere to look really. And that was the situation. And then obviously Rasulullah SAW, he was sent to the earth, and we know the title of Rasulullah SAW. He is the Rahmatan lil Alameen, the mercy for the world, for the universe really, for all the worlds. And we compare that really to the situation of and the condition of the humanity at that time. So it all relates to each other really. And the prime objective of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yes, he did,
brought people back to the right path. But the prime thing which he did in his life was to get rid of the rotten system of um, life, really, which was, and we all know how he turned everything into a completely different place. And so, again, the prime reason for Rasulullah was as a mercy to the world. So, and mercy in a way that, of course, he changed the system. He wasn't just merciful in a personal level. He established a system which was merciful to the people, to the humanity as a whole. So, indeed, a great moment, um, the birth of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, again, I mean, like I said in the beginning, that the point is not just to celebrate, really, um, but the point is to really understand why they were sent and the sort of life they lived, really. Um, Celebrating something is quite easy, but doing what, well, basically following the teachings and doing exactly what that person did, that requires some different kind of love, really. Because then obviously, if you do follow what they did, what they said, then certainly, just like them, you will have uh, all sorts of trials and tribulations come your way. And indeed, if you say you love someone, then in those times, it will be on you to prove that yes, you do love them, and you're not just um, limited to celebrating their birth and celebrating their life, but you do love them in literally every manner of their lives. So, inshallah, let's learn more about the life, uh, I mean, the way of life of Rasulullah Sallam. We all know about his life, really, but his the way of his life, how he did things, how, I mean, what he lived for, to be honest. Because unfortunately, that is something which is missing from most of our lives, really, me including. So, inshallah, let's learn more about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Because indeed, when you know something, then you're more likely to follow it as well. So, Jazakallah khair for joining us today. Inshallah, tomorrow we will have the weekly program relating to the help with the marriages of individuals. Inshallah, again, something we do need your support with for, and highly appreciate all of your comments, your appreciations, really. So inshallah, we will be back tomorrow. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا، عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا، كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. محمد قلبي وروحي فداك سيدي، ليت عيني تراك، راحتي هي دوما في هداك، ليس يشفع لنا سواك. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة